1. So question number 1 says if A and B have GCD greater than 1, then we have to prove tau of AB is less than tau of A, tau of B. देखो हमें पता है कि अगर AB का GCD 1 हो तो by multiplicative property tau of AB is equal to tau of A into tau of B. Now here the GCD of A and B is 1. So let the GCD of A and B be D. Right? Now if A is say P1, A1, P2, A2, so on up to PR, AR, and some Q1, beta 1, and QK, beta K, and say B is P1, B1, P2, B2, PR, BR, and S1, gamma 1, ST, gamma T. So if you see, हमें क्या गिवन है, इन दोनों नंबर्स का जीसीडी डी है, तो इसका मतलब डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, राइट? सो इट मींस डी विल बी व्हाट? डी इज सम p1, let me use the notation alpha 1, p2 alpha 2, pr alpha r, where obviously alpha I is what? Alpha I is minimum of AI and BI. बेटा क्लियर है? यू सी, अगर मेरा नंबर है 2 to the power 3 and 5 और दूसरा नंबर है 2, 5, 7, तो ऑब्वियसली इन नंबर्स को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? यू सी, एक तो 2 डिवाइड करेगा बिकॉज इधर 2 क्यूब है, इधर 2 है, देन एक 5 डिवाइड करेगा बिकॉज 5 दोनों में कॉमन है. तो सारे प्राइम्स की जो मिनिमम पावर होती है बेटा, इज इट फाइन? Yes, ma'am. राइट. सो ऑब्वियसली a is some number, b is some number, उनका एक कॉमन डिवाइजर है, तो obviously they will have some primes in common. That's why I have written p1, p2, pr in both of them and some other primes. And ai और b1 में से जो मिनिमम पावर होगी वो d की पावर होगी. Right. So let us move now. So you see now what we have to find. Now what is AB? So AB will be what? AB will be P1 to the power A1 B1, P2 to the power A2 plus B2, and so on. PR to the power AR plus BR, Q1 to the power beta 1, QK to the power beta K, S1 to the power gamma 1, and ST to the power gamma K. So you see, by definition, what will be tau of AB? क्या हो जाएगा tau of AB? What will be tau of AB? Girls, what will be tau of AB? By formula tau of AB, any number क्या होता है? What is tau of any number? So you see, prime की power कितनी है? A1 plus B1 plus 1, A2 plus B2 plus 1, AR plus BR plus 1, और इधर से क्या हो जाएगा? बीटा 1 plus 1, बीटा K plus 1, and so on. Gamma 1 plus 1, gamma 2 plus 1, gamma K plus 1. राइट. अब देखो हमें क्या चाहिए? टाउ ऑफ ए, टाउ ऑफ बी, राइट? प्रोडक्ट ऑफ दिस. So now if you see, tau of A into tau of B, ये क्या हो जाएगा? tau of A में क्या था? A1 से लेके कहां तक थे?
इधर खेल लो, नहीं अंदर आ जाओ। So you see A1 plus 1, इसके बाद क्या था? What was the other number? AR तक जाएंगे, बीटा K, so you will S1 to the power gamma 1, ST to the power gamma T. So you see A1 plus 1, so on up to last में कितना आएगा? कितने थे बेटा? R थे ये? So AR plus 1, और साथ में इधर इसके पास साथ था आपके पास बीटा 1 थे, बीटा 1 plus 1, so on up to बीटा K plus 1, राइट. एंड साथ में B का क्या था? B1 plus 1, B2 plus 1 and so on, बीटा R plus 1, और इधर क्या था? गामा 1 plus 1 and so on up to गामा T plus 1. राइट. तो अगर हम देखें, अब अगर हम देखें, now you see this is this term and this term. Now you consider, now first of all, can you tell me, so in general, AI BI plus 1 is less than AI plus 1 BI plus 1. Yes or no? Is it true? ये देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो राइट हैंड साइड को, सो यू सी AI BI, AI plus BI plus 1. सो यू सी एक टर्म एक्स्ट्रा है इधर, AI BI, तो ऑब्वियसली ये टर्म इस टर्म से बड़ी होगी. सो अगर मैं इन सारी टर्म्स को प्लस कर दूं, सो देयरफॉर व्हाट यू गेट? A1 plus B1 plus 1, A2 plus B2 plus 1 and so on, AR plus BR plus 1. So this whole term will be less than what? A1 plus 1, B1 plus 1 and so on, AR plus 1, BR plus 1. फर्दर हमने क्या किया? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया. A1, ये क्या? A1 B1 plus 1, so on, AR plus BR plus 1. अब मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया बीटा 1 plus 1 से बीटा K plus 1, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया गामा 1 plus 1, गामा T plus 1. So obviously इधर क्या बन जाएगा? This is less than what? A1 plus 1, B1 plus 1, A2 plus 1, B2 plus 1, AR plus 1, BR plus 1, और साथ में क्या आ जाएगा? Obviously बीटा 1 plus 1 वाली टर्म सारी, और लास्ट में कौन सी टर्म आ जाएगी? गामा T plus 1 टर्म वाली टर्म सारी. So if you see this whole term left hand side वाली, ये क्या बन गया? टाउ ऑफ AB नहीं बन गया ये बेटा? yes or no? See, this whole term is nothing but what? Tau of AB, and right hand side is nothing but what? Tau of A into tau of B. तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? Tau of AB is less than tau of A into tau of B. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Right, so we just have used the definition, nothing else. Right, let us take question number 3. Okay. So question number 3. So question number 3 क्या बोलता है? Prove that summation D divides N log D is equal to 1 by T to tau N log N. So you see, proof wise,
ऑब्वियसली समेशन किस पे हो रही है, समेशन डी पे हो रही है, where d divides n. So let d1 d2 so on up to dr be divisors of n. अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में d और n दोनों दिखें तो एक चीज याद रखना कि आपको सो देयरफॉर n अपॉन d1 ये यूज करना है, n अपॉन d2 n अपॉन dr. I'm sorry, are also divisors of n. अब हमने यहाँ पे कितने divisors of n लिए हैं? What are the divisors of n? हमने कितने divisors of n लिए हैं? r. और हमें पता है number of divisors of r क्या होते हैं? tau n. So therefore here tau of n is equal to r, right? Now let us, so summation d divides n log d. तो इसका मतलब क्या हो गया? log of d1 plus log of d2 plus so on log of dr. So you see, or what you can write, you can write d in either d1 or n upon d1, they'll be same numbers but order different hoga. So plus 2 plus 3 karo ya 3 plus 2 karo, this is one and the same thing, log of dr. Now if you see log of a plus b kya hota hai, log of a by b kya hota hai, this will be what, log of n minus log of d1, right, plus log of n minus log of d2 and so on, log of n minus log of dr. अब बेटा मुझे एक बात बताओ, कितनी बार आ गया log n, कितनी बार आ गया? r times. And r times. और दूसरा क्या बन गया? If you see, so this is now what? So this is what? r times log n minus log of क्या बना? माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बना? log of d1 plus log of d2 plus log of dr, यही बना ना? Yes ma'am. log of d1 log of d2 and so on log of dr. So you see this is, so right left hand side पे क्या लिया था हमने? हमने ली थी summation d divides n log d. So you see this is r log n minus, so you see this is nothing but summation d divides n log d. उसी की summation ही बन रही है ना, log of d1 log of d2 log of dr. So अगर हम इस summation को इस तरफ ले जाए तो ये क्या बन जाएगा? Twice of summation d divides n log d r log n. और अभी आपने प्रूफ किया था, अभी हमने लिखा था कि r किसके इक्वल है? टाउ n के. सो टाउ n log n, तो यहां से क्या आ गया? समेशन d divides n log d is equal to what? 1/2 tau n log n. बेटा is it clear? यही प्रूफ करना था, Yes ma'am. right? Is it clear बच्चे, all of you? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, let us take question number 5. So question number 5 has two parts. Show that, so first part is show that dn is equal to 2 if and only if n is prime. dn is equal to 2 if and only if n is prime. So proof wise, so let us take let dn is equal to 2. So dn का मतलब क्या हुआ? dn means what? So number of divisors, so therefore number of divisors of n is right. Is it fine? बेटा is it fine? Yes ma'am. So अगर एक नंबर के डिवाइजर्स, एक नंबर के दो डिवाइजर्स है, सिर्फ एक नंबर के दो ही डिवाइजर्स है, इसका मतलब नंबर क्या होगा? See every number, yes, every number has two trivial divisors. कौन से? 1 and the number itself. So here the number has only two divisors. So here the number has, here the number of divisors of n are only 2. So obviously n has to be prime because सिर्फ prime numbers के दो divisors होते हैं. Is it clear बच्चे?
Yes, ma'am. All of you? Yes, Now ma'am. conversely. Obviously, conversely, again, it is true. Now, n is prime. So this implies what? Divisors of n are? So divisors of n are 1 and n only. So 1 and the number itself. So इसका मतलब tau of n कितना हो गया? Tau of n is number of divisors. So obviously tau of n is equal to 2. Is it fine? Tau of n लिखो या dn लिखो, it's one and the same thing. Beta, is it fine? Now see, B part says sigma of n is equal to n plus 1. ये भी हो जाएगा? बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. So you see, if n is prime, it will have only two divisors, 1 and the number itself. So obviously in this case, sigma of n is equal to n plus 1. अब conversely, अगर sigma of n plus 1 के equal है, हमें पता है every number has minimum two divisors, 1 and the number itself. So obviously sigma n should be greater than or equal to n plus 1. But हमें तो यहाँ दिया हुआ है it is equal to n plus 1. It means the number has to be prime. बेटा clear है? Yes, ma'am. Right? Okay. Let us take question number 9. So it's a bit typical. Okay, before question number 9, I want to take question number 10. Question number 10 jaldi ho jayega. So question number 9, so in case time. So let us first take question number 10, then I'll come to question number 9. Prove that sigma of minus kn is n to the power minus k sigma kn. You see, आपको definitions लगानी है. So you see, proof wise, sigma of minus kn क्या होता है? In general हमें पता है sigma of kn क्या होता है? Sum of the nth powers, kth powers. So यहाँ पे क्या है? Minus है, तो obviously sum of minus kth powers. Is it fine? So let d1, d2, dr be divisors of n. मैंने आपको बताया अगर आपको क्वेश्चन में n भी दिखे, so therefore n upon d1, n upon d2, n upon dr are also divisors of n. अब देखो हमें क्या चाहिए? Now sigma of minus kn, ये क्या होता है? So this will be what? Sum of the divisors. So n upon d1 इसकी power minus k plus n upon d2 इसकी power minus k plus so on n upon dr इसकी power minus k. So you see powers are minus k. So if you see numerator में n की power minus k is common. And अगर आप देखो 1 upon d1 to the power minus k, तो अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा? d1 to the power k. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. Right? Similarly यहाँ क्या बन जाएगा? d2 to the power k. Then dr to the power k. बेटा ये क्या बन गया अंदर? What is d1 to the power k, d2 to the power k, dr to the power k? Try to see आपको क्या प्रूफ करना है. Are you able to see? Are you able to see this term? Yes, ma'am. See n to the power minus k. So n to the power minus k. और साथ में क्या था? d1 to the power k, d2 to the power k. So basically आप सारे divisors का sum कर रहे थे और आप क्या ले रहे थे? आप d की power k ले रहे थे. So you see this is nothing but what? Sigma of k. बेटा क्लियर है? हमें यही प्रूफ करना था. Sigma of minus kn is equal to this. Is it clear बच्चे? Yes, ma'am. Right, let us take 9th question also. So then with this exercise, this will be over. So we'll start with the next exercise tomorrow. So question number 9 says, for any positive integer n, prove that. So we have to prove sigma of 24n minus 1
is congruent to 0 mod 24. Beta, just 1 minute. Okay, so we have to prove sigma of 24 and -1 is congruent to 0 mod 24. So you see again now, right? So again now, so so let D1, D2, DR. What's the time? Okay, it's 4. Okay, so it's 4 o'clock, right? So what I'll do, we'll do this question tomorrow. I'll do this question because it will take time. Is it fine? Yes, ma'am. Right, so what you people will do, please, exercise 9b is over. This question I'll take tomorrow because it will take time otherwise. So please solve all the examples and whatever questions. So what I'll do, we are left with 2 exercise. So first I will complete those exercise, then I'll start with your doubts. एक बार पहले syllabus खत्म हो जाएगा, then there is no tension. Is it fine? Yes, ma'am. Right, so I'll do exercise question number 9 tomorrow, and then we'll start with exercise 9c. So I want ki by this week I'll say finish your syllabus, right? Okay, ma'am. Okay beta, thank you, we'll meet tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you beta, thank you.